Namaste Creative Bharat. I'm Hansika Mehbubani and I'm from the Shriram School, Malsri, Gurgaon, and I'm currently in grade 12. And I basically came across a rural village in India, very close to Kasauli, and there I saw that rural kitchens still have chulhas, and it was very astonishing because we as urban people think that rural India is now developing, but yes, the government is doing a lot, but it's not something that they can achieve very quickly because of the great population that India has. So I thought that why don't I start something known as the Eco Chulha. I even got my design patented. It took me about 6 months to come up with the design, get it patented, and then finally getting to the prototype was another big hassle for me. But I still achieved what I achieved because of my mother, because of so many people who supported me through my journey, and I really hope to install it in any rural home in India, and I hope to impact the country. Thank you so much. दिमाग में कहाँ से आया ये इनोवेशन कैसे आया? मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि मैंने देखा एक महिला खांसती हुई बाहर, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, खास के बुरा हाल था उनका। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे दिल में मुझे लगा, और फिर इसलिए मैंने किया, और बहुत टाइम लगा, एंड आई होप कि मैं एक्चुअली कुछ कर पाऊँ इसके साथ। एंड जो चीज़ें शुरू हुई कैसे शुरू हुई, किन किन चीज़ों को, क्योंकि जब पेटेंट करवाते हैं किसी चीज़ को इनोवेट करते हैं तो उसके लिए थिंकिंग चाहिए, रिसर्च चाहिए, वो कैसे किया? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई मॉम। उन्होंने हमेशा मुझे इंकरेज किया टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एंड द स्कूल दैट आई एम इन, द श्रीराम स्कूल मल्सरी, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो रियली नर्चर्ड मी एज अ पर्सन एंड एज अ क्रिएटिव थिंकर. एंड आई थिंक दैट it's not only about where I come from, my family background, it's just a person's will to do something is what that really like pushes them to do that particular thing, and I think that's all that really keeps anybody going in this field.